Hello everyone. In this video, I am going to tell you about culture and personality approach. Basic features of culture and personality school. The primary aim of this school is to make the psychoanalytic study of interrelationship between culture and personality, and this school is also known as Psychological School of Anthropology, and the approach is known as anthropopsychological because here both the theories of psychology and anthropology are together used for studying the culture and personality of the particular group. So it is also known as anthropopsychological approach, and the school is Psychological School of Anthropology. And the anthropologists related with this school, they are influenced by Gestalt psychology and Freudian psychology. And Gestalt psychology that deals with the total observation of human behavior pattern. During 1920s, the anthropologists like Ruth Benedict, Margaret Mead, Linton, Cora Du Bois, they criticized the early theories of evolutionism, devolutionism, structuralism, functionalism, and structured functionalism, and they give this new approach of culture personality school, and they viewed that culture practices refer to the character, temperament, or the personality of members of the group, and they differ due to cultural differences. Culture, according to them, is acquired, imitated, and learned. Means, according to them, culture is a learned behavior and it results in the personality development. And here, personality is not related to the body physique, but while it is related to the qualities of individual. Personality, it is determined by environment, heredity, culture, and peculiar experiences. There are three approaches in this school. First approach is culture influences personality. Second approach says that personality influences culture. And third approach says that both influences each other. Means culture influences personality and personality influences culture. First approach is culture determines personality formation. Means culture influences the personality, and the propounder of this approach was Margaret Mead. The books written by her are Coming of Age in Samoa, Growing Up in New Guinea, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, Cooperation and Competition Among the Primitive People, and Keep Your Powder Dry, Male and Female Growth of Culture, a photographic study of Balinese childhood, a study of culture at a distance, cultural patterns and technical changes, new lives for old, continuities in cultural evolution. So these are the books written by her. Both Ruth Benedict and Margaret Mead were leading lady anthropologists of the Columbia University, and Mead, along with Ruth Benedict, they were a student of French Boas. She was also a student of Ruth Benedict. Means Margaret Mead was a student of Ruth Benedict and of French Boas, and beside this, she was a close colleague of Ruth Benedict. Margaret Mead was influenced by Edward Sapir, American anthropologist and student of French Boas. तो मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट दोनों ही लीडिंग लेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की. मार्गरेट मीड रूथ बेनेडिक्ट की भी स्टूडेंट थी, और वो बेनेडिक्ट उनकी कलीग भी थी, और वो मीड उनकी बेनेडिक्ट की स्टूडेंट भी थी, और दोनों ही फ्रेंच बोआस की स्टूडेंट थी. मार्गरेट मीड एडवर्ड सेपर से भी इन्फ्लुएंस थी, जो कि फ्रेंच बोआस के स्टूडेंट थे और अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. Contributions of Margaret Mead. In her first book, Coming of Age in Samoa, a psychological study of primitive youth for Western civilization in 1928, she found that adolescence among the Samoan children was simply a part of their life. They were free from any stress and frustration because society was very free. They know the facts related to birth, death, and sex, etc. And she pointed out that human nature is not rigid and unyielding. This was the reason behind less emotional and rebellion cultural mood during adolescence during Samoan girls and boys than that of the American middle class youngsters. तो उनकी जो पहली बुक थी
कमिंग ऑफ एज इन समोआ, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी की, प्रिमिटिव यूथ की वेस्टर्न सिविलाइजेशन से उनको कंपेयर किया और बताया कि जो एडोलेसेंस है वो जो प्रोसेस है यूथ में, जो समोन गर्ल्स हैं उसमें फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस है, मीन्स किसी भी स्ट्रेस से वो फ्री है, उनमें कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं पाई गई, कोई भी स्ट्रेस नहीं पाया गया एडोलेसेंस पीरियड के दौरान, क्योंकि उनके लिए सभी चीज़ें ओपन थी, वो ओपन सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वहाँ उनके पास जो डेथ बर्थ और सेक्स से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सब सबको मालूम होती थी, और इसलिए उनका जो बिहेवियर होता था वो रिबेलियन उसमें बिहेवियर नहीं शो करते थे, और लेस इमोशनल बिहेवियर होता था, एंड दे वर फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो एक स्टडी की मार्केट मीट ने अपनी coming of age in Samoa among the Samoan girls and Samoan youth, and she found that they were less emotional and less rebellion than that of American middle class youngsters. And in her second book, Growing Up in New Guinea, in 1930, she made a study of socialization and educational process of manners of New Guinea. She tested the belief made by Lewis Bruhl, a French anthropologist, that primitive children are more animistic than their parents. While her study on managed children, she found that they were less imaginative and less animistic than their parents because they were not given any tasks or devices to develop their imagination. This was the result of enculturation process. तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट बुक ग्रोइंग अप इन न्यू जीनिया में एनकल्चरेशन प्रोसेस को स्टडी किया कि जो न्यू जीनिया के मैनस चिल्ड्रन है, मैनस कम्युनिटी के चिल्ड्रन, उन्होंने पाया कि वो लेस इमेजिनेटिव थे और लेस एनिमिस्टिक थे अपने पेरेंट्स से, जैसा कि जबकि लेवी ब्रूल ने पाया कि जो प्रिमिटिव चिल्ड्रन होते हैं, ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं, वो मोर एनिमिस्टिक होते हैं दैन देयर पेरेंट्स, while the Mead found that they were less animistic and less imaginative than their parents because they were not given any task or they were not provided with any devices to develop their imagination, and that's why they were less animistic and less imaginative than their parents. And this way she disproved the belief given by Levi Rule, and this was the result of the enculturation process, which she found among the manners of New Guinea, that the children were less imaginative and less animistic than their parents. In her third book, Sex and Temperament, Three Primitive Societies, 1935, she compared and tested the cultural patterns among three communities, Arapesh, Ndugumor, and Shambuli of New Guinea, and she found that differences in personality traits were while they were all living in the same geographical area, and that was due to difference in their cultural pattern, which shapes the personality. The first community was Arapesh. Arapesh people were living in a naturally protected area, and there was sense of security. The society was self-sufficient. जो भी वो yield करते थे उसी में वो संतुष्ट रहते थे, और वो उनकी पूरी population को संतुष्ट करने में मीन्स वो जितना भी yield होता था उसमें वो उनके लिए सफिशिएंट होता था, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत लो होती थी, और यही रीजंस की वजह से मेल और फीमेल आपस में सबमिसिव थे. देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल और कंपटीशन अमंग देम. द सेकंड कम्युनिटी मुंडू गुमोर, देयर वाज अ competition, struggle, conflict among their members, in between the husband and wife, in between the wives and first wife and second and other wives, wife and daughter, son and father. There were a lot of conflicts and competition. And why this was the condition among them? Because there was a custom of exchange of girl or daughter for new wife, and both father and son में ये conflict होता था कि नए वाइफ के लिए कौन डॉटर को एक्सचेंज करेगा. तो जब फादर ही एक्सचेंज कर लेते थे न्यू वाइफ्स के लिए, तो सन के मन में ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था, और जो उनकी अर्ली वाइफ्स होती थी उनके बीच में भी डॉटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि डॉटर को एक्सचेंज करके नई वाइफ आती थी, इस वजह से
वो अपनी डॉटर को भी किल कर देते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड होती थी। तो इस तरह आपस में सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल की भावना थी, उनके बीच में कंपटीशन होता था, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन among them, and male have large number of wives. That was a symbol of their prestige and status. The third community was Shamboli, and in case of Shamboli, the females were dominating and they all take all the decisions, while the male were dependent on the females. Because female were dominating, they serve the administrative roles, while the males cook food and they clean houses, they take care of their children, and female were free to select their husbands. And due to this, the nature of the males were kind. They were kind, peace-loving, and submissive in personality, while the females were very aggressive in character. So this was the study of three communities in New Guinea by Margaret Mead, and this suggests that because living in same geographical area, their personality was different due to different cultural environment among them. In her book Growth of Culture, a photographic study of Bailey's childhood, she make use of photographic equipment and film. तो उन्होंने इस स्टडी में जो बैलनीज चाइल्डहुड को स्टडी करते हैं, इसमें उन्होंने फोटोग्राफिक मेथड का इस्तेमाल किया, एंड दिस वाज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज विद विजुअल एंथ्रोपोलॉजी। तो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी के केस में उनका ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जिसमें उन्होंने बैलनीज चाइल्डहुड को का एक फोटोग्राफिक स्टडी किया, and she used 25,000 Leica stills and over 22,000 feet of 16 mm film. In book Cooperation and Competition Among the Primitive People, 1937, she studied 13 cultural groups belonging to different economies like food gathering, hunting, agriculture, industrial, etc. And she found that both cooperation and competition was found in the primitive societies. When there was common property, there were cooperative. Non-cooperation competition was found among the individual and private ownership holders. Greed to acquire more property increases, resulting in competition, and he proved that primitive were both cooperative and competitive and not only cooperative. तो उन्होंने माना कि हर सोसाइटीज़ में जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, उनमें सिर्फ कोऑपरेशन ही नहीं मिलता था, उनमें कंपटीशन भी था। तो कोऑपरेशन के साथ साथ हर प्रिमिटिव सोसाइटी में कंपटीशन भी पाया गया। मीड के द्वारा उनकी स्टडी में उन्होंने पाया कि जैसे कि फूड गैदरिंग ट्राइब डकोटा जो थी वो कोऑपरेटिव थी, लेकिन जो फूड गैदरिंग मैनस ट्राइब थी वो कॉम्पिटिटिव थी। एस्किमोस जो है इंडिविजुअलिस्टिक थे। इसी तरह एग्रीकल्चरल ट्राइब्स में अरुंटा कोऑपरेटिव थे, ओजिब्वा इंडिविजुअलिस्टिक थे और इफुको कॉम्पिटिटिव थे। तो बोथ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन both were found among the primitive people, and she studied 13 cultural groups belonging to different economies, hunting, gathering, industrial and agriculture, etc. And she found both cooperation and competition among the primitive societies. और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, मीन्स कॉमन ओनरशिप से इंडिविजुअल की ओनरशिप की तरफ लोग चेंज होते हैं, तो उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। तो अर्ली सोसाइटीज़ जो है उनमें कोऑपरेशन भी था, लेकिन जैसे जैसे उनमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। तो बोथ कोऑपरेशन एंड कंपटीशन were found among the primitive societies. Study of national character. This was also a contribution of Margaret Mead, and she viewed that national character can be studied by culture and personality approach. In her book Study of Culture at a Distance in 1953, that was edited by Mead and Rhoda Matras, she opined that without direct observation of people, with the help of national character study can be studied at a distance, पर्सनैलिटी ऑफ पीपल ऑफ नेशन कैन बी नोन। तो उन्होंने पाया कि डिस्टेंस से स्टडी करके, मीन्स डायरेक्ट स्टडी ना करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ना करके, यदि हम कल्चर को एट ए डिस्टेंस स्टडी करते हैं तो हम किसी भी कल्चर का या नेशन का हम नेशनल कैरेक्टर जान सकते हैं और उनकी कल्चर एंड पर्सनैलिटी को
स्टडी किया जा सकता है। इन हर बुक कीप योर पाउडर ड्राई एंथ्रोपोलॉजी लुक्स एट अमेरिका इन 1942, मार्गरेट मीड स्टडीड द नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका। तो इस बुक में उन्होंने अमेरिका के नेशनल कैरेक्टर को स्टडी किया और कल्चर एट ए डिस्टेंस स्टडी की कीप योर पाउडर ड्राई बुक में, एंड शी फाउंड दैट अर्ली पर्सनालिटी ट्रेट्स अमंग अमेरिकन, जापानीज, रशियन वीपीज वर सेम। तो जो अर्ली पर्सनालिटी होते हैं, जो चाइल्डहुड पर्सनालिटीज होती हैं, वो सब में सेम होती हैं। वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं लोग, सेम होता है। लेकिन एज चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे वो ग्रोज करता है फैमिली से आगे, फिर उसकी स्कूल एजुकेशन होती है, फिर उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, वैसे वैसे उनकी पर्सनालिटी डिफर करने लगती है। और इस तरह हर नेशन की अपनी खुद की अलग नेशनल कैरेक्टर होता है, उनका अलग पर्सनालिटी होती है, बेसिक पर्सनालिटी होती है। तो in this way culture and personality shows their national character, and it started showing differences, means national character या personality shows differences as the child grows with the family and school education, and in this way culture and personality shows their national character. So this was the study of national character by Margaret Mead in case of America. Re-study approach. In 1930, she studied Manus people of New Guinea in the form of a book, Manus of New Guinea. She visited Manus of New Guinea again after 25 years. 25 साल बाद उन्होंने फिर से न्यू गिनिया के मैनस पीपल्स को स्टडी किया, and she studied the old people, recorded the changes that took place during these 25 years, especially after World War II. And she published the book in the form of a book that the name of the book was New Lives for Old, a study in cultural transformation, that was published in 1956. Next contribution by Margaret Mead was continuity in cultural evolution. In her book Continuities in Cultural Evolution 1964, she opined to study the actual process of change in current generation or between adjacent generation to deal with the continuity in the cultural evolution. So this was the contribution of Margaret Mead in Culture and Personality School. Next approach is personality determines culture or personality influences culture, and the profounder of this approach was Ruth Fulton Benedict. The books written by her are Patterns of Culture and Chrysanthemum and Sword. She was a leading lady anthropologist of Columbia University along with Margaret Mead, and she was the teacher of Margaret Mead, and she was a student of French Boas. In 1922, she conducted first fieldwork among Serrano Indians of California under supervision of A. L. Grover. She did fieldwork among Juni, Cochiti, and Pima. She made extensive use of field studies of French Boas, Kwakiutl, Ruth from Brangel, Juni, and Arab Fortune Dobu for studying cultural patterns. तो उन्होंने फील्ड वर्क किया 3 कम्युनिटीज़ के अमंग जूनी, कोचिटी एंड पीमा में 1924, 25 एंड 26 ईयर्स में, और ऑलरेडी जो फ्रेंच बोआज, रूथ पंजेल और अरब फॉर्चून की स्टडी थी क्वाकिउतल, जूनू और डोबू कम्युनिटी में, उसको भी उन्होंने यूज़ किया और कल्चरल पैटर्न स्टडी करने के लिए इनकी जो फील्ड स्टडीज़ थी फ्रेंच बोआज, रूथ पंजेल और अरब फॉर्चून की, उनको उसने अपने कल्चरल पैटर्न स्टडी के लिए यूज़ किया. She gave the concept of cultural pattern, and cultural pattern, according to her, according to Benedict, consists of cultural traits and complexes. When both traits and complexes united in functional whole, they make cultural pattern. For example, in Indian cultural pattern, it consists of cultural complexes like Gandhism, spiritualism, joint family system, caste system, etc. And ये जो cultural complexes है, they again are composed of several cultural traits. तो इस तरह किसी भी कल्चर का जो ग्रैंड जो डिज़ाइन होता है उसको कल्चर पैटर्न कहते हैं, जो कि बहुत सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस और कल्चरल ट्रेट से मिलकर बना होता है. The concept of cultural pattern was first formulated by her
in paper Psychological Types in the Culture of Southwest in 1928 based on her fieldwork on Pima. And later, she elaborated this concept in her book Patterns of Culture in 1934. Her another famous book, Chrysanthemum and Sword, in 1946, was based on the study of Japanese cultural pattern and national character. The cultural pattern of two groups differ from each other. तो दो ग्रुप्स के कल्चर पैटर्न आपस में डिफर करते हैं, दो कंट्रीज के दो ग्रुप्स के हमेशा आपस में डिफर करते हैं. The culture pattern is the arrangement of traits in specific pattern, style or design that gives the integrity to the culture as a whole, and many cultural patterns together make culture as a whole. These separate designs or the styles give the grand design to culture that is known as culture configuration. तो बहुत सारे कल्चरल पैटर्न्स मिलकर एक ग्रैंड डिज़ाइन देते हैं कल्चर को, जिसको कल्चर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. उन्होंने कल्चरल पैटर्न को जो मीन्स रूथ बेनेडिक्ट ने कल्चर पैटर्न को दो काइंड ऑफ जीनियस के थ्रू समझाया. और ये जो अपोलोनियन एंड डायनोसियन वर्ड उन्होंने लिया, शी यूज्ड these terms for two kinds of genius in the culture, and these terms were taken from नेट्से. नेट्से ने ये दो टर्म दिए थे, अपोलोनियन एंड डायनोसियन, और नेट्से, और उन्हीं के टर्म को उन्होंने अब कल्चर पैटर्न थ्योरी को समझाने के लिए यूटिलाइज किया. अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट, अपोलोनियन means it taken from the Greek word Apollo. Apollo means the Greek god that is sun deity and the god of peace, discipline, kind and humanity. And according to Benedict, the Pueblo जो पीपल थे न्यू मैक्सिको के, दे आर पीस लिविंग कोऑपरेटिव एंड काम. तो उनमें अपोलोनियन उन्होंने पर्सनालिटी देखी. कल्चर पैटर्न में अपोलोनियन जो पर्सनालिटी दिखाई दी पुपेलो पीपल में न्यू मैक्सिको के, और पुपेलो पीपल पीस लविंग कोऑपरेटिव एंड काम थे. जबकि डायनोसियन जो ग्रीक वर्ड डायनोसियस से लिया गया है, एंड दैट इज रिलेटेड विद द लग्जूरियस लाइफ and drinking habit. Conflict, non-cooperation among the members was found, and the two communities which were related by this Dionysian personality, Dovu and Kwakiutl of Northwest America. Impact of personality on culture, and to show the impact of the personality on the culture, or to study this the impact of personality on culture, she studied three communities. She selected three communities: Pueblo Juni of Mexico, New Mexico, Dubu of Melanesia, and Coahuila of northwest coast of America. Pueblo were the Apollonian personality, and the Dobu and Coahuila are Dionysius personality. Pueblo Juni. Pueblo Juni were peace-loving, cooperative, helping, kind, and they were less inventive and they respect their traditions. Among them, there was a common ownership of property, and they believed in religion and magic both. Means both religion and magic was found mixed among them, and they used magic for the welfare of the society. Means society के welfare के लिए वो religion और magic को use करते थे, not for harming others, and that is why there were no conflict or competition among them. Because they respect their tradition, they believe in both magic and religion, and they believe means for the welfare of the people. They used magic for the welfare of people, and they were very calm. They were peace loving and cooperative people. That is why she placed the Pueblo Juni among the Apollonian personality, while the Dobu were the people among them, the conflict, competition, violence was very prevalent, and they break their promises, and the religion is mixed with magic among them, but the magic was used to harm others, not for welfare of people, but to harm the others, to harm the other people. That is why among the Dogo, Dionysian personality was found. Among the Kwakiutl, that was the third community, they were materialistic,
and they believe that the wealth determines the status and prestige of people. They don't believe in kinship and religion, and court-like behavior was found among them. So this was a study of impact of personality on culture. Because their personality was like this, their culture was determined by their personality. A national character and culture at a distance method. During World War II, Benedict was appointed by U.S. Office of War Information to undertake the research on enemy nation, and that during that period anthropologists were not allowed to conduct field work. जैसा कि अभी कोरोना के केस में कोविड फैला हुआ है ऑल अराउंड वर्ल्ड, जो लोग कोविड से सफ़र कर रहे हैं, कोविड-19 से, तो इस वजह से अभी आप फेस टू फेस जाकर इंटरेक्ट करके किसी भी कम्युनिटी के साथ फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आज के केस में हम अभी जो करंट सिनेरियो उसमें हम कल्चर एट ए डिस्टेंस स्टडी कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे रूथ बेनेडिक्ट को करना पड़ा, क्योंकि उस समय एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अलाउ नहीं था कि वो फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन करके कल्चर को स्टडी कर सकें। तो इसलिए उन्होंने कल्चर एट ए डिस्टेंस मेथड का इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो अमेरिकन जेलों में जो जापानीज पीपल थे उनको स्टडी किया, उनकी फील्ड वर्क, उनकी बायोग्राफीज को स्टडी किया, उनके डिफरेंट जो लिटरेचर थे, जापानीज लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स और लाइफ हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज़ लिया उन्होंने उनको जाकर, जो उसमें मीन्स जेलों में बंद थे जापानीज लोग, और तमाम ऐसे इमाइग्रेंट्स थे जापानीज जो वहाँ अमेरिका में रहते थे, उनसे उन्होंने जाकर इंटरव्यूज़ लिए। उनके कंसंट्रेशन कैंप में जो प्रिजनर्स रखे हुए थे, जापानीज प्रिजनर्स, उनसे जाकर बातें की, और फिर जो उस पर जो भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया इन सारे मेथड से, उसके आधार पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो जापानीज जो कैरेक्टर होता है, मीन्स अर्ली चाइल्डहुड में जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, फिर जो जैसे जैसे एडोलेसेंस आता है और यूथ की तरफ जाते हैं, तो उनमें उनके बिहेवियर में क्यों इतना चेंज होता है, ये सारा कुछ उन्होंने स्टडी किया कल्चर एट ए डिस्टेंस मेथड की मदद से, और इसी से उनको जापानीज नेशनल कैरेक्टर के बारे में पता चला। बेसिक जो पर्सनालिटी थी जापानीज की वो पता चली, एंड द रिजल्ट्स वाज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए बुक दैट इज क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड that was published in 1946. So this study was made during World War II, and Benedict was appointed by the US office to conduct the research, to undertake the information research on the enemy nation, and to collect the information regarding them. And for that she used the culture at a distance method. She applied the content analysis method to study the culture at a distance, and she selected the Japanese prisoners in concentration camp of America. She examined their historical documents, literature of Japan, art form, and she took their interviews and their life histories. She studied their diaries, case studies. She interviewed the Japanese immigrants in the America and officers who gave their knowledge of Japan, and the result was published in the form of chrysanthemum and sword. And she found that during the childhood they were given full love, freedom, and cooperation care. But as soon as they reaches the adolescence, a strict discipline is imposed on them, and they have to behave according to elders in a pleasing manner. They have to work according to their traditions, and this difference in due to two periods of rearing, that is childhood and adolescence. तो क्रिसैंथेमम वहाँ का नेशनल फ्लावर है जापान का, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक फूल की तरह पालते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लव केयर अफेक्शन देते हैं, फुल फ्रीडम देते हैं, और अचानक से जैसे ही एडोलेसेंस स्टेज आती है, अचानक से उनके नेक पर तलवार लटकने लगती कि हर चीज़ उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, हर कुछ जैसा एडल्ट मीन्स उनके पेरेंट्स कहते हैं वैसा ही करना होता है, वो अपने मन से नहीं कुछ कर सकते, और उन्हें इंडिपेंडेंट लाइफ जीने पर मजबूर किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट बने, खुद से अर्निंग करें, और इस वजह से जो उनमें बिहेवियर पैदा होता है एडोलेसेंस के समय, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जापानीज यंग यूथ जो होते हैं
और वायलेंट हो जाते हैं, because they do not get the cooperation from their parents and children, elders, and that's why a sense of aggressive and violent personality develops in them. And this was a study of national character and the basic personality traits by Benedict among the Japanese people, and she said that because in the early childhood they were cared like a flower chrysanthemum, that is why she said that they were given care like chrysanthemum in their childhood, and because during the adolescence a sword always hangs on their neck, that is why the book name is Chrysanthemum and Sword. And Maurice Hopler criticized the Bennett's idea of genius because जो कल्चरल पैटर्न में उन्होंने अपोलोनियन और डायनोसियन जीनियस की बात की, बेनेडिक्ट ने उसको मोरिस होपलर ने क्रिटिसाइज किया, and he gave the theory of culture themes for integration of culture in his book An Apache's Life Way, the economic, social, and religious institutions of Chiricahua Indians in 1941. The book published by Maurice Hopler in 1941, and in this book he criticized the Benedict's idea of cultural pattern of genius, and he proposed the theory of culture themes, and he found that themes are the situations which control the behavior, and themes result in the integration of the culture. Both culture and personality influences each other. This was the third approach of this culture and personality school, and the propounders are Linton, Cordobois, and Gardiner. Rolf Linton. Linton was basically an archaeologist. He was an American anthropologist, and the book written by him are The Study of Man, The Cultural Backgrounds of Personality. He gave the concept of status and role, and he worked on the culture of Marquesa Islanders. His interest on the culture and personality school developed after his participation in a seminar organized by Columbia University. The other participants were Abraham Gardner, a practicing analyst, and the Cora Dubois anthropologist. So this seminar was organized by Abraham Gardner, in which Linton and Cora Dubois and Gardner both all three were the participants in the seminar, and they met together. Concept of culture and personality, types of culture. Culture. Culture, according to Linton, is sum total of knowledge, attitudes, and natural behavior patterns shared and transmitted by members of a particular society. And the personality, according to him, is the organized aggregate of psychological processes and states, habits pertaining to individual. तो कल्चर एंड पर्सनालिटी को लिंटन ने इस तरह डिफाइन किया कि कल्चर इज द सम टोटल ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड नेचुरल बिहेवियर पैटर्न जो कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा शेयर किया जाता है, वो पूरा नॉलेज, एटीट्यूड और नेचुरल बिहेवियर का जो सम टोटल है उसी को कल्चर कहते हैं. और पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी मीन्स जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स ऑर्गेनाइज एग्रीगेट, जो भी लोगों का बिहेवियर होता है, उनके सोचने का तरीका होता है, उनकी हैबिट्स होती है, वो सभी कुछ मिलके एक पर्सनैलिटी बनाते हैं. And there are three types of culture according to Linton: real culture, ideal culture, and culture construct. Real culture is the actual behavior. It's a way of life of community members, how the community member behave, and this is the real culture. It's a sum total of the learned and shared behavior in a particular situation. तो किसी भी community के लोग जो भी behave करते हैं जिस तरीके से, और जो भी उनका लर्न और शेयर्ड बिहेवियर होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो उनका एक्चुअल बिहेवियर होता है, जो करते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसी को हम रियल कल्चर कहते हैं. एंड द सेकंड इज द आइडियल कल्चर, दैट इज अ फिलोसफिकल एंड ट्रेडिशनल कल्चर. मीन्स होना चाहिए, जैसा होना चाहिए जो कि हमारे ट्रेडिशंस में है कि ऐसा कल्चरल ट्रेड्स पाए जाएंगे तो वो आइडियल कल्चर कहलाएगा. तो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आइडियल कल्चर के ट्रेड्स होते हैं जो कि फिलोसफिकल ट्रेडिशन के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो रियल कल्चर होता है वो एक्चुअल कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा किया जाता है. एंड कल्चर कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है कि दैट इज रिटन, व्हाट इज रिटन अबाउट द कल्चर. तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी कल्चर के बारे में
और उसको हम जब लिख देते हैं तो उसी को हम कल्चर कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। तो व्हेन ए कल्चर इज स्टडीड वी राइट अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कल्चर, दैट इज नोन एज कल्चर कॉन्स्ट्रक्ट। He also gave the concept of cultural universals, alternatives, and specialties. He said that the traits which are followed by all the members are known as cultural universals, like all around the world people wear cloth, they criticize the infanticide, they criticize the child marriage, or anything which is supported by or accepted by all around the world, people all around the world, and those culture traits or patterns are called as cultural universals. While when the people choose one among them, means there are so many alternatives, and when they choose among a number of alternatives, then that is known as cultural alternatives, like the variety of religion, and you have to follow any one religion out of them. You have to choose any one vehicle to go anywhere. और फूड प्रेफरेंसेस हैं आपके सामने, तो आप किसी एक फूड को खाना चाहेंगे, दो फूड को खाना चाहेंगे, सारे फूड आप नहीं खा सकते हैं। तो जब अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके सामने, विकल्प होता है, तो उसको कल्चरल अल्टरनेटिव्स कहते हैं। और यूनिवर्सल्स होता है कि वो सबको सबके द्वारा एक्सेप्टेड होता है, सभी मेंबर्स उनको फॉलो करते हैं और वो चीज़ें सबको एक्सेप्टेबल होती है, तो वो यूनिवर्सल होता है। और जब कुछ स्पेशलिटी पाई जाती है जो कुछ ही लोगों के द्वारा होती है, when some specialty is shared by someone not by all, like baby nursing is a female specialty, तो बेबी नर्सिंग सिर्फ फीमेल्स कर सकती, मेल नहीं कर सकते, तो उसको हम स्पेशलिटीज कहते हैं, कल्चरल स्पेशलिटीज कहते हैं। General culture pattern has sub-cultural pattern like age, sex, religious, linguistic, etc. And contra-culture means those who do not only differ from general pattern but challenge them, like डकैत, नक्सलीज। तो जो नक्सलीज या डकैत होते हैं जो कि जनरल पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं, वो उससे अलग वो कुछ करना चाहते हैं और उसको चैलेंज करते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रा कल्चरल पैटर्न कहते हैं। He pointed out that culture and personality both influences each other, and he viewed that culture is the product of needs. Satisfaction of needs maintain the survival of man and nature. So, like Malinowski, he also viewed that culture is the product of need, or culture is means for satisfaction of need. तो satisfaction of need जो होता है उससे survival होता है man and culture का. According to him, needs are of two types: biological and psychic needs. तो बायोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स होती हैं फूड की, हंगर की, थर्स्ट की, सेक्स की, वो बायोलॉजिकल नीड्स है। और जो साइकिक नीड्स होती हैं तो वो मेंटल सपोर्ट या साइकिक सपोर्ट के लिए होते हैं, जो माइंड से जुड़ा होता है। और साइकिक सपोर्ट नीड्स भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ह्यूमन बीइंग की कुछ साइकिक नीड्स होती हैं और इनका सेटिस्फैक्शन भी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। He viewed that for the survival of human being, satisfaction of psychic need is also very important. तो लाइक बायोलॉजिकल नीड्स, साइकिक नीड्स का सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के जीवित रहने के लिए। एंड दिस गिव्स द मेंटल इमोशनल सपोर्ट, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ टू द चाइल्ड एंड एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। Simultaneous response principle. He gave the simultaneous response principle, and he viewed that an individual make the responses to satisfy the needs in three ways: by imitation, by trial and error method, and by intellectual method. तो इन तीन तरीके से किसी भी कोई भी इंडिविजुअल अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है, एंड ही मेक रिस्पॉन्सेस टू सेटिस्फाई द नीड्स बाय इमिटेशन, नकल करके, ट्रायल एंड मेथड करता है, या अपनी बुद्धि से कुछ करता है। अकॉर्डिंग टू हिम जो there is a basic culture means all the members of society go through similar socialization process and share similar custom, belief, tradition and common cultural pattern or the characteristic or called as basic culture. तो किसी भी कल्चर के कुछ बेसिक कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, कॉमन कल्चरल पैटर्न होते हैं और उस सोसाइटी के सारे लोग उनसे सिमिलर सोशलाइजेशन प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। स्टेटस पर्सनैलिटी टर्म उसने डिफाइन किया कि इट्स अ स्पेशल पोजीशन दैट इज ऑक्युपाइड बाय द मेंबर्स विद सम इस प्रिविलेजेस। कुछ विशेष लोगों को कुछ पोजीशन दी जाती है जिसको स्टेटस पर्सनालिटी कहते हैं। सोशल इन्वर्टर्स होते हैं जो इन्वेंट करते हैं नई चीज़ों को समाज में और पुरानी चीज़ों को हटाकर नया कुछ इन्वेंशंस करते हैं, समाज में चेंज लाते हैं, उनको सोशल इन्वर्टर्स कहा गया। और बेसिक पर्सनालिटी अप्रोच उन्होंने दिया था लिंटन ने कार्डिनर के साथ मिलके।
तो both Linton and Gardner together gave the concept of basic personality, जो कि अभी हम कार्नर के जब कंट्रीब्यूशन बताएंगे तो डिस्कस करेंगे. अब्राहम कार्नर, the books written by him are The Individual and Society, Psychological Frontiers of Society, They Study in Man. The Psychological Frontiers of Society was written in 1945, and this book was written along with Linton. Co-author was Linton, and They Studied Man co-author was E. Preble. Abraham Gardner was a psychoanalyst or psychiatrist by profession. He was a student of Sigmund Freud, and he was a neo-Freudian. Neo-Freudian means he accepted some Freud's theories, but he rejected or modified the others. In some theories वो accept किए, लेकिन कुछ theories को उन्होंने modify किया या reject किया. अर्ली लाइफ जो थी उन्होंने बताया कि जो किसी भी व्यक्ति की जो अर्ली लाइफ होती है वो मोस्ट क्रूशियल होती है इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी. तो अर्ली लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी के पर्सनालिटी फॉर्मेशन में. और इन 1936 ही ऑर्गेनाइज सेमिनार इन विच सेपेर, Benedict, Linton, Cora Dubois, Carl Wittens, and the result was published in the form of book Individual and His Society, 1939. He gave the concept of basic personality along with Linton in his book Psychological Frontiers of Society, and he gave concept of basic personality type in 1945. And he, according to him, the common characteristic of personality among all members of group is called as basic personality, which is the result of cultural influences of the individual. तो किसी भी समाज के रहने वाले लोगों में जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसी को हम बेसिक पर्सनालिटी कहते हैं. और ये कल्चर इन्फ्लुएंस, कल्चर मतलब इट्स द रिजल्ट ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंसेस. कल्चर का ही इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल पे, जिसकी वजह से ऐसी पर्सनालिटीज डेवलप होती है. चाइल्ड रीडिंग, फीडिंग और अदर ट्रेनिंग्स आर रफली सिमिलर इन गिवन ग्रुप. तो किसी भी ग्रुप में लोगों जो बच्चों का शुरुआती जो उनका लालन पोषण होता है उनको फीड किया जाता है या दूसरी ट्रेनिंग्स दी जाती है बच्चों को, वो मोर और लेस सिमिलर ही होती है. और यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है एडल्ट में आगे बढ़कर, और इस तरह बेसिक पर्सनालिटी किसी भी कल्चर की डेवलप होती है. बेसिक पर्सनालिटी टाइप इज एक्सप्रेस इन ग्रुप्स आइडियोलॉजीज, इमोशनल एंड कॉग्निटिव ओरिएंटेशन टू लाइफ एंड डेथ. तो उनकी आइडियोलॉजीज में इमोशनल और कॉग्निटिव जो ओरिएंटेशन है लाइफ और डेथ के प्रति, उसमें किसी भी ग्रुप की बेसिक पर्सनालिटी दिखाई देती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर अकॉर्डिंग टू गार्डनर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स ओल्डर एंड मोर स्टेबल होता है, मीन्स जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बेसिक पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्पफुल, जैसे कि फैमिली किनशिप. ये जो अर्ली चाइल्ड, जो चाइल्ड के बर्थ के बाद जो उसकी पहला जो सोशलाइजेशन होता है, जो उसकी ग्रोथ के बाद, वो उसकी फैमिली या किनशिप में होता है. और फैमिली ही इम्पॉर्टेंट बेसिक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि किसी भी चाइल्ड की जो बेसिक पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्पफुल होती है. और उसकी मदर सबसे पहले उसकी टीचर होती है जो उसको बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसकी मदद से उसको डेवलप होते हैं उसकी पर्सनालिटी में. उसके फादर का नेक्स्ट रोल होता है एंड देन अदर फैमिली मेंबर्स. इसी तरह जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेकेंडरी टाइप ऑफ कल्चर, वो इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से डेवलप होते हैं और जो नीड सेटिस्फाई करते हैं that was created by the primary institutions. तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से निकली हुई नीड को सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई करते हैं एंड these secondary institutions are like religion, taboo system, ritual, etc. So they satisfy the needs created by the primary institutions, and in this way there are two types of culture, primary and secondary. He studied the Marquesa Island of Polynesia and he found the basic personality traits among the Marquesa Islanders. There was a female infanticide to cope the drought and resulted periodic starvation. तो क्योंकि वहाँ drought conditions होती थी और उनसे निपटने के लिए वो छोटी बच्चों को मार दिया करते थे. They were not killed by themselves. Means Marquesa people नहीं खुद मारते थे, दूसरे tribes जो killer tribes थी उनकी वो मदद लेते थे उनको किल करने में. और इस वजह से उनमें मेल फीमेल रेशियो इम्बैलेंस हो गया था, जिससे निपटने के लिए उन्होंने पॉलीएंड्री करना शुरू किया. मीन्स
बहुत सारे जो है मेल्स की एक गर्ल से शादी होती थी, तो हस्बैंड्स बहुत सारे होते थे, गर्ल एक होती थी। एंड इस तरह चाइल्ड और हस्बैंड्स को सेटिस्फाई करने में फीमेल को दिक्कत होती थी, और जिसकी वजह से चाइल्ड और हस्बैंड में महिला के प्रति फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता था, फियर एंड एंजाइटी डेवलप होती थी, कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग द इन्फेंसी। तो अर्ली चाइल्डहुड में चूंकि माँ का पूरा प्यार बच्चों को नहीं मिल पाता था, बिकॉज शी हैज so many husbands and she has to give time to everyone, and that's why there was a lack of care or love for the children, and that's why they what they compromised during the infancy, that was resulted in the form of frustration, fear and anxiety. And during their adulthood they get united against the women, and they develop the animosity against the women. And ये जो फीचर्स थे एनिमोसिटी, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन के, ये उनके फोक टेल्स में पता चलते थे लिखे, और उनके जो लीजेंड्स हैं उनमें पता चलता था कि दे हैव द jealous feeling and animosity against the women. So the folktales and Marquesan legends gave the evidence of jealousy and animosity against women, and compromise during infancy resulted in frustration, fear, anxiety when united against the women and developed the animosity. And these cultural situations, the childhood develops the basic personality traits in Marquesan people. Gardner said that change in primary institutions resulted in basic personality structure, and that resulted in the change of the secondary institutions. Each culture has its basic personality traits which differ from others. For example, among the Hindu, Muslim, Sikhs, there are different cultural patterns. और बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी जो कल्चर होता है वो डिफर करता है, और कल्चर डिफर करने की वजह से, उनके फैमिली सिस्टम डिफर करने की वजह से उनका जो बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट होता है वो अलग होता है। इसी तरह डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में, जैसे कि मुंडा, ओराव, संताल, गोंड, इन सब में भी बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, बिकॉज देयर कल्चर इज डिफरेंट। कोरा डुबोis, she was a lady cultural anthropologist of America, and her book was People of Ellore, a social psychological study of East Indian Island. She was associate of Gardner, and she went Ellore Island in East Indies in 1937 for her field work, and she collected a rich ethnographic account of Ellore people, 8 lengthy biographies, life histories on dreams, and children drawings. तो चिल्ड्रन ड्राइंग्स पर, ड्रीम्स पे, लाइफ हिस्ट्रीज, 8 लेंथी बायोग्राफीज उन्होंने कलेक्ट की, और रिच एथनोग्राफिक अकाउंट एलोरिस पीपल का उन्होंने कलेक्ट किया, कोरा डुबोis ने, एंड शी आल्सो मेड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट. Upon her return, she submitted the life histories to Gardiner for his analysis. Test results were given to Dr. Emile Oberholzer, and while she gave the children drawings to Trude Smith for schemate for interpretation. All of them were kept unknown of their other work means सभी को एक दूसरे के काम से मतलब अनजान रखा गया, किसी को दूसरे के बारे में नहीं पता था कि लोग एक ही पीपल मीन्स एक ही कम्युनिटी के रिजल्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, एंड दे वर्कड ऑन देयर ओन विदाउट कंसल्टिंग अदर्स, एक दूसरे से बिना कंसल्ट किए वो सभी काम कर रहे थे. दे वर अननोन टू वन अदर्स वर्क, एंड बट द रिजल्ट्स वर फाउंड सेम, लेकिन वर्क जो रिजल्ट्स पाए गए वो सबके सेम पाए गए. कार्डिनर, डॉक्टर एमिल ओबरहुजर एंड ट्रूस स्किमिट, उन सब के जो रिजल्ट्स थे वो एक ही पाए गए, एंड ऑल ऑफ देम फाउंड द रिजल्ट क्या था, क्या पाया गया उन्होंने पाया कि उनमें जो एलोरीज पीपल में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थे वो दे वेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, एपैथी, सस्पिशियसनेस, सैलोनेस इन एलोरीज लाइफ, and all the results were combined and tested. Cora Dubois called this model personality because it was derived from test results, while Gardner's basic personality was collected from cultural data. तो इसके पहले जो कार्डिनर की स्टडी थी, जो लिंटन के साथ उन्होंने बेसिक पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो कल्चरल डेटा के आधार पर था, और यहाँ भी कल्चरल डेटा है, यहाँ भी बेसिक पर्सनालिटी ही है, पर यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट से डिराइव हो रहा, इसलिए
इस बेसिक पर्सनालिटी को मॉडल पर्सनालिटी कहा गया। तो जो जब हम बेसिक पर्सनालिटी की बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक पर्सनालिटी दैट वाज गिवन बाय लिंटन एंड कार्डनर, and when we said about model personality, this concept was given by Cora Dubois. And why here the basic personality is called as model personality? Because it is based on test results. एंड क्या वहाँ पे जो कल्चरल बैकग्राउंड क्या था एलोरीज का, उसमें उन्होंने पाया कि जो मदर थी वो वेजिटेबल फूड सप्लाई का ध्यान रखती थी एंड फादर मीट सप्लाई का ध्यान रखता था। चिल्ड्रन को उनके जो बड़े एल्डर सिस्टर ब्रदर्स थे उनके साथ छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे में जो उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते थे, बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स होते थे, उसमें वो नेग्लेक्ट फील करते थे। they were neglected with unstable life, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं होता था अपने बच्चों के लिए, और वो एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो कि उनका केयर नहीं करते थे, उनके पास वो पड़े रहते थे। तो जिस समय उनको चलना बैठना खाने का सब सिखाने की उम्र थी, उस समय उनको नेग्लेक्ट फील होता था और उस वजह से उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी थी, एंड दैट वाज रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक सस्पिशियसनेस, एंग्जाइटी, फियर, अनएग्रेसिवनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फियर बहुत डेवलप हो गया था उनमें, हमेशा वो एक दूसरे पर शक करते थे, सस्पिशियस होते थे, एंग्जाइटी होती थी उनमें हमेशा, और डरे होते थे, और दे टेक एडवांटेज ऑफ नेबर्स बाय लाइज एंड फ्रॉड, और दूसरों का वो फायदा उठाने के लिए झूठ बोला करते थे या चालाकी से करते थे। तो इस तरह उनमें इस तरह के कल्चरल ट्रेड्स डेवलप हो गए थे बिकॉज ऑफ नेग्लेक्शन ड्यूरिंग देयर early formative years. The key theme of Allori's folklore and religion was parental hatred and frustration, and each individual shows unique traits, but basic personality traits were similar, which were called model personality or the national character. And because the model personality or the basic personality traits were like aware of suspiciousness, anxiety, and unaggressiveness, and lack of confidence, and this became their national character. तो Allori's people का जो basic personality, model personality था, वही उनके नेशनल कैरेक्टर में तब्दील हो गया। मीन्स एडल्ट्स में सब में यही कैरेक्टर्स पाए गए। एंड वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट जो इन लोगों ने अपने साइकोलॉजिकल मीन साइको एनालिटिक स्टडी में यूज़ किया होगा, दिस टेस्ट लाइक रॉर्सास टेस्ट, मूरीज थीमेटिक टेस्ट, बेंटर्स स्टार टेस्ट, इमनेंट judgment test. So these are the various psychological tests which are used in psychological studies of culture and personality school. Next is the contribution of Whiting and Child, and the book written by him are both of them are Child Training and Personality, Cross Cultural Study 1953, Six Cultures Studies of Child Rearing in 1963. They studied 75 primitive communities to test the hypothesis that whether there is any impact of child training practices in developing the initial satisfaction and socialization anxieties and are related to illness beliefs and therapeutic practices. It was found that socialization anxieties have great impact on child in developing the adult personality, feeling guilt, fear, etc. तो उन्होंने 75 मीन 75 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में स्टडी किया कल्चरल पर्सनालिटी अप्रोच को स्टडी करने के लिए। उन्होंने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये स्टडी की कि जो चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनका जो इनिशियल स्टेज में उनका चिल्ड्रन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स बाद में जो सोशलाइजेशन एंग्जाइटीज़ और उससे जुड़े हुए वो इलनेस बिलीव्स, ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं या इनका एडल्ट पर्सनालिटी में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस स्टडी में उन्होंने रिजल्ट में पाया कि जो सोशलाइजेशन एंग्जाइटीज़ होती हैं वो किसी भी चाइल्ड के जो एडल्ट पर्सनालिटी डेवलप में बहुत उनका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है और जैसे कि गिल्ट फील करना, डरना या एग्रेसिवनेस होना या अनएग्रेसिवनेस होना, जो भी एडल्ट पर्सनालिटी में ट्रेट्स होते हैं वो चाइल्ड के जो सोशलाइजेशन एंग्जाइटी उसका असर बहुत पड़ता है। तो study shows that socialization during the early and late infancy have
the great impact on adult personality. One can predict the someone's personality on the basis of their early and late infancy training. तो जो भी उनकी अर्ली ट्रेनिंग होती है उसके आधार पर हम उनके जो एडल्ट पर्सनालिटी उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी एडल्ट पर्सनालिटी में ट्रेट्स आ सकते हैं. John Whiting was an American sociologist and cultural anthropologist, and he, with his wife B.B. Whiting, organized the largest comparative study of six cultures of socialization around the world to study the child rearing practices and child development. So, in their book, Six Culture Studies of Child Rearing, 1963, Whiting, along with his wife B. Whiting, made largest comparative study of six culture of socialization. तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने 6 कल्चर्स की स्टडी की जो उनकी बेस थी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस और चाइल्ड डेवलपमेंट, जो उनका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस का एडल्ट पर्सनालिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो कैसी हैं, उनका क्या चिल्ड्रन डेवलपमेंट में असर पड़ता है. तो ये सारा कुछ उन्होंने स्टडी किया और ना ही सिर्फ एक कल्चर बल्कि 6 कल्चर्स जो है और अराउंड द वर्ल्ड उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टडी किया. एंड दे क्वाइन द टर्म कल्चर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट. ये दो वर्ड उन्होंने क्वाइन किए. कल्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट, दिस टर्म वाज coined by John Whiting. And the second anthropologist, Irving Child, he was an American psychologist, and he worked on child personality development and socialization process. And both of them together wrote a book, Child Training of Personality, a cross-cultural study, 1953. And John Whiting, along with his wife B. Whiting and Irving Child, wrote another book, that is Six Culture Studies of Child Rearing, in 1963. So this was all about the contribution of various anthropologists in the field of culture and personality approach. Thank you very much. Please like, share and subscribe my video and give your valuable comments in the comment box. And the content in this video is purely based on book and internet sources. Thank you. Meet you in next video.